Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last class of lipids, that is terpenoids, as well as I will discuss the basic introduction of proteins. So let's move to the whiteboard. So classes of lipids. We were discussing and we have discussed acyl glycerols. We have discussed waxes. We have discussed phospholipids. And the fourth one remaining, the last one, which have been discussed in our book, is terpenoids. So terpenoids, dear students, they are large and important group of compounds having repeated units called isoprenoid units. Clear? तो टर्पेनॉइड्स ये लार्ज और बहुत ही अहम किस्म के कंपाउंड्स हैं which come under the class of lipids and they are made up of repeated units of or repeating units of isoprenoid units. अब डिस्टेंस ये isoprenoid units क्या होती हैं? So these are basically 5 carbon compound units. एक्चुअली ये 4 की चेन होती है और इसमें इस कार्बन के ऊपर कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, 1 और 2 पे 2, यानी कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं एंड हियर इज CH2. सो दिस इज कॉल्ड एज द आइसोप्रेनाइड यूनिट. और डियर स्टूडेंट्स, ये रिपीटेड यूनिट्स आपस में मिल करके एक बड़े बड़े लार्ज कंपाउंड्स बनाती हैं. उन लार्ज कंपाउंड्स को जनरलाइज्ड वे में कहा जाता है टर्पेनॉइड्स. क्लियर? और स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप है लिपिड्स का, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकी तीनों ग्रुप्स से. अभी हमने इससे पहले पढ़ा था एसाइल ग्लिसरॉल्स. उसमें हमने पढ़ा था एसाइल ग्लिसरॉल किस किस से मिलकर बनते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से. इनमें जो ट्राइग्लिसराइड्स थे उसमें 3 फैटी एसिड थे और 1 ग्लिसरॉल था. फिर हमने पढ़ा था वैक्सेस. तो वैक्सेस के अंदर भी हमने बात की थी दे आर लॉन्ग चेन अल्केन्स प्लस अल्कोहल्स प्लस कीटोन्स एंड द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. तो उसके अंदर भी फैटी एसिड्स मौजूद हैं, इसके अंदर भी फैटी एसिड मौजूद हैं. और फॉस्फोलिपिड्स में हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि ग्लिसरॉल के साथ पहली और दूसरी कार्बन के साथ अटैच हैं 2 फैटी एसिड्स. लेकिन टर्पेनॉइड्स, डियर स्टूडेंट्स, दे आर डिफरेंट. वो डिफरेंट इन द सेंस दैट दे हैव नो फैटी एसिड्स. ये इस वे में हेट्रोजीनस हैं. क्लियर? दे हैव नो फैटी एसिड्स. इसमें आप देखेंगे कहीं पे भी फैटी एसिड नहीं है. सिंपल ये यूनिट्स हैं, ये आपस में रिपीट हो करके मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स बनाती हैं. और सिर्फ चूंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिपिड्स की तरह की होती हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर पुट अंडर दिस कैटेगरी लिपिड्स. सो
ये वाहिद ऐसे हैं जिनके अंदर फैटी एसिड्स नहीं होते। और दूसरी इनके अंदर ख़ास बात जो है, इनके अंदर देयर इज़ अ रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इनके अंदर बहुत कॉमन है, मतलब कि ये पॉलीमर्स बनाते हैं इसी यूनिट के, दिस इज आइसोप्रेनाइड यूनिट, इसके पॉलीमर्स बनते हैं। और होगा क्या, बाय द कंडेंसेशन of isoprenoid units in different ways, they form, तो यही आइसोप्रेनर यूनिट्स मुख्तलिफ तरीके से कंडेंस करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने याद रखना है कि यहां पर मैकेनिज्म कौन सा, वो प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस कौन सा चल रहा है, कंडेंसेशन। क्लियर? तो कंडेंसेशन के जरिए ये मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे। दे फॉर्म द टर्पीन्स और दे फॉर्म carotenoids, and they also form rubber, and they also form steroids. क्लियर? टर्पीन्स ये आमतौर पर ऑयल्स से रिलेटेड है। कैरोटीनॉइड्स, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये चैप्टर नंबर 11 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कैरोटीनॉइड्स दे आर द एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और वहाँ पर भी मैं आपको याद कराऊंगा जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था टर्पेनॉइड्स में कि कैरोटीनॉइड्स क्या है, इनकी नेचर क्या है। इसी तरह से रबर तो आपने देखा भी हुआ है और पढ़ा भी हुआ है। इस तरह स्टीरॉइड्स, सो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि स्टीरॉइड्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, जैसे एस्ट्रोजन, जैसे प्रोजेस्टेरोन वगैरह वगैरह, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, वो सारे यहीं से ऐसे आगे बन रहे होते हैं। सो इन दैट वे द टर्पेनॉइड्स आर इम्पॉर्टेंट। नाउ moving towards our new topic, that is proteins. Very, very important topic, proteins. So we have discussed the two components, the two major compounds. We have discussed organic compounds which are present in our body. First of all, carbohydrates, and secondarily we have discussed the lipids, all of the lipids. Now we are going to discuss the third component, our third important organic compound, that are the proteins. So dear students, proteins, the most abundant compound in the cells which make up to 50% of their dry mass। यानी सेल में से अगर वाटर को रिमूव कर दिया जाए, उनको ड्राई कर दिया जाए, तो 50% तो सिर्फ उनके अंदर क्या होंगी, प्रोटीन्स। क्लियर? अभी हम हमारी बॉडी पे नजर मार लें, हमारी बॉडी में क्या कुछ है। हेयर्स, दे आर प्रोटीन्स। स्किन पूरी की पूरी दैट इज प्रोटीन। हमारे अंदर मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, ऑल ऑफ देम दे आर प्रोटीन्स। हमारे अंदर मौजूद एंजाइम्स, दे आर प्रोटीन्स। हार्मोन्स, दे आर प्रोटीन्स। क्लियर? तो हमारे ये नेल्स क्या हैं, दे आर प्रोटीन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी जो है इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जो कंट्रीब्यूशन है हमारी बॉडी मास का, दैट इज प्रोटीन्स। क्लियर? Now there are some functions
of proteins, या इस तरह से भी आ सकता है, or you can say the importance of proteins, why they are important. So dear students, we have to study a lot of important points regarding them. Number one, almost all enzymes, inshallah, we will discuss in chapter number 3. Almost all enzymes are proteins. और आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमने चैप्टर के शुरू में भी डिस्कस किया था, दे आर टोटली एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड. क्लियर? वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एंजाइम्स के ऊपर. और एंजाइम्स के प्रोटीन्स. सो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. सो दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म. क्लियर? इस वजह से हम इनको मेटाबॉलिक प्रोटीन्स भी कह सकते हैं. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, द हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स. They also regulate metabolism and various chemical reactions in the body. So these are the 2 points. Number 1 is the enzymes. Number 2 are the hormones. Now, number 3, the clotting proteins. So in our blood, we have got we have 12 clotting factors, which are protein in nature, that helps in clotting of blood after injury. तो जैसे ही बॉडी में कोई इंजरी होती है, कट लगता है, कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो जाता है, एनी काइंड ऑफ इंजरी, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, तो ब्लड हर जगह पे मौजूद है, तो उसके अंदर ये 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. वो फौरी तौर पर विद इन सेकेंड्स एंड विद इन मिनट्स उस ब्लड को रोक देते हैं, क्लॉट कर देते हैं. तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. और इनमें एक कुछ का नाम लिख देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल प्रोथ्रोम्बिन, आपने नाम सुना होगा, प्रोथ्रोम्बिन, एंड फाइब्रिनोजेन, clear, and thromboplastin, etc., etc. All these are like anti-hemophilic factor A, anti-hemophilic factor B, anti-hemophilic. All these are the clotting factors or clotting proteins in our blood. इसी तरह से dear students, we have got transport proteins. In our body, like the hemoglobin, transports oxygen. Some others, they also transport metals, etc. So they act as transport proteins. So not only oxygen transports oxygen, as well as carbon dioxide. It is also transported by the hemoglobin. इसी तरह से dear students,
we have got antibodies, the defense proteins. The defense proteins. The antibodies, which are called as antibodies, the antibodies produced by B lymphocytes, जो कि टाइप हैं lymphocytes की, और lymphocytes they are the white blood cells, ठीक है, and the B lymphocyte produced by the B lymphocytes helps against infections. क्लियर? तो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये हमारे जो बीटा सेल्स हैं, सॉरी बी लिम्फोसाइट्स हैं, दे release, they prepare antibodies, and these antibodies are used to kill the microorganisms. So these are the defense proteins. इसी तरह से dear students, we have got contractile proteins. Contractile proteins like the muscles. The muscles are proteins in nature. Any kind of muscle, the smooth or skeletal or cardiac, all these are proteins in nature, and they help in locomotion and movement of organs by contraction. क्लियर? तो ये इस तरह से हमें हेल्प कर रही होती है. मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, चल रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, all these things requires these muscles. क्लियर? तो मसल्स के कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने से ये सारा कुछ पॉसिबल है. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, some proteins, they are the microtubules, which are made up of tubulin, ठीक है, they help in the cell division. Clear? So inshallah in second year, chapter number 21, the cell cycle, उसमें आप इसके details देखेंगे. Clear? So these are the proteins which help in cell division during anaphase. Clear? जिसमें सेपरेशन हो रही होती है. प्रोफेज में वो कंडेंसेशन होती है क्रोमैटिन की और क्रोमोसोम्स बनते हैं, और फिर माइटोटिक से एपरेटस बनता है, स्पिंडल बनता है. मेटाफेज में वो सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं, काइनेटोक और माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनको पकड़कर सेंटर में लाइन कर देती हैं. और फिर तीसरी फेज होती है एनाफेज, उसमें जो ये काइनेटोक और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके बिहाफ के ऊपर जो क्रोमोसोम्स हैं दे गेट सेपरेटेड एंड इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस. और किस फेज में? एनाफेज में. और चौथी जो टीलोफेज होती है उसमें दैट मीन्स द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज. तो इस तरह से सेल डिवीजन में हेल्प आउट कर रही होती हैं. ठीक है. नाउ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, दे आल्सो मेड द स्ट्रक्चरर. तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं? लाइक skin, nails, hairs, ठीक है, all these are the structures. Muscles, clear? So they help in maintaining the structure
of an organism. Clear? Over, dear students, there are a lot of functions and importance regarding the proteins. If we start talking about, so there are a lot of functions which are being provided by these proteins. So dear students, hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के हवाले से कुछ मज़ीद. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.